Greetings, students. Okay, let us continue with the chapter "The Summer of the Beautiful White Horse." And first of all, let us recall what we had done in the previous video. Now we had talked about two brothers, Aram and Murad, and how they actually, came up with this white horse which they wanted to ride. Okay, now children, we talked about Gargolian family who was poor as they had no money. Their whole tribe was poverty stricken, this we learned. But most important of all was that they were famous for their honesty. Though they were famous for their honesty, and from a long time they had to build up they had built up a reputation. Had built a reputation for being proud and honest, right? Now they had never taken even advantage of anyone else. Now then we had talked about Murad. Then we had talked about Murad, who was considered crazy, who came 4 in the morning and woke his brother Aram by stopping on the by tapping on the window for of Aram's room, and it was summer with daybreak just around the corner. Now Aram came and they went to ride the horse. Okay, now then children, Murad was compared um, to the family streak, crazy family streak, and he was considered the natural inherent of the crazy streak of this tribe. Before Murad, Uncle Khushrov was considered as crazy in the family, and we had read how Uncle Khushrov, why was he called crazy? Okay, where a house was on fire, his house was on fire, and said, pay no attention to it. Okay, now let us continue. We rode and my cousin Murad sang. Okay, जैसे जैसे रोड मतलब वो they were riding a white horse, and cousin Murad sang. What did he sang? Sang a song because they were Armenian. For all anybody knew, we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belonged. Okay, we let the horse run as long as it felt like running. Okay, so they were riding the horse. At last my cousin Murad said, get down, I want to ride alone. Now Murad is saying to Aram that get down, I want to ride this horse. Well, you let me ride alone, I asked. तो उसने बोला क्या तुम मुझे भी राइड करने दोगे अकेले बारी बारी से. That is up to the horse, my cousin said. Get down. वो तो घोड़े को घोड़े पर है कि वो तुम्हें राइड करने देगा कि नहीं. उसे बोला गेट डाउन. द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड. उसने बोला घोड़ा मुझे राइड करने देगा. ठीक है. वी शैल सी, ही सेड. तो ही सेड वी शैल सी, मैं देखूंगा. डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. तो बोला डोंट फॉरगेट, मुझे पता है हॉर्स को कैसे राइड करवाना है. Well, I said, anyway you have with the horse, I have also. For the sake of your safety, he said, let us hope so. Get down. All right, I said, but remember, you've got to let me try to ride it alone. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazire, run. Okay, now children, what is happening out here? Why did he kick the horse inside? When you plunge a horse, it has some steel nails into that shoe. Now what happened, children, when you kick it, it gets hit to the stomach skin, which it hurts them. Okay, and now when it has hits the what do you call it, stomach of the horse, it starts running. See here where the shoe is.
Okay, that point we are talking about. Okay, now what is Wazire? Wazire is the nickname of the horse. Okay, now the horse stood on his hind legs. Hind means पीछे वाले legs. He stood up, snorted, let out breath with force from the nostrils, ऐसे ऐसे करके, right? And burst into fury of speed. That was the loveliest. Burst into the fury of speed means started racing very, very fast. Okay, now the writer is saying that was the loveliest thing I had ever seen. Okay, my cousin Murad raced the horse across the field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned, dripping wet. Dripping में पानी रहा होगा तो it was dripping wet. Okay, then um, the sun was coming up. Now it is going to be morning. Okay, it was already morning, but this was, now it is getting late. Now it's my turn to ride, I said. Now Aram is saying, it's my turn. I want to ride. My cousin Murad got off the horse. Ride it, he said. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. Awful is terrible. Okay, fear imaginable. The horse did not move. Now he did not move. Kick into his muscle. I told you that stomach. My cousin Murad said, what are you waiting for? We've got to take him back before everybody in the world is up and about. And then he said, kick the horse, ठीक है, to the muscle. We have to take the horse back. सबको पता लग जाएगा कि हमारे पास घोड़ा है, right? Which they had stolen. I kicked into the muscle of the horse. Once again, it reared. Reared means raised its hind leg part. ठीक है? Then once again it reared and snorted. Then it began to run. I did not know what to do. Instead of running across the field of the irrigation ditch, the horse ran down the road of the vineyard of Dukran Halabian, where it began to leap over vines, grapevines they are talking about. वो वहाँ पर इंस्टेड उसको कहाँ जाना चाहिए था, डिच के पास जाना चाहिए था, बट वो कहाँ चला गया, वाइन के पास. ठीक है, देन इट कंटिन्यूड running. My cousin Murad came running down the road. Okay, I'm not worried about you, he shouted. You've got to get that horse. You go this way and I'll go this way. If you come upon him, be kindly, I'll be near. ठीक है, तो उसने उसको गिरा कर घोड़ा भाग जाता है. अब क्या होता है, मुराद आता है, बोलता है कि मुझे नहीं पता चलता तो क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, बट बी काइंड टू हॉर्स, अच्छे से रखना हॉर्स को. और तो इस जगह जा, मैं उस जगह जाते, किसको ढूंढने, हॉर्स को ढूंढने के लिए. एंड इफ़ यू कम अपॉन, मतलब अगर तो उसको मिलता है, ठीक है, क्या करेंगे हम, यू आई बी नियर यू, ठीक है, उसको पकड़ लेना. आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरीगेशन डिच. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक. अब कितना घंटा लगा, आधा घंटा लगा. ठीक है, ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन. तो उसने बोला जल्दी आ, जंप ऑन. द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ. उसने बोला अब पूरे लोग जाग गए हैं, राइट. What will we do? I said. Well, he said, we'll either take him back or hide him until tomorrow morning. तो बोला या तो हम जिसका ओनर है उसके पास लेके जाएंगे, या तुम क्या करोगे, या हम इसको छुपा देंगे. He didn't sound worried and I knew he would hide him and take him back. And उनको पता था कि अब उसको hide करके उसको he will take him back. Not for a while at any rate. ठीक है, सो ही डिड नॉट गेट वरिड. उसको डर नहीं लगा यार क्या होगा कि किसी ने हमें पकड़ लिया, नहीं, वो वहाँ छुपा देगा उसको. वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड. आई नो अ प्लेस. उसने बोला मुझे एक प्लेस पता है, आई हाइड हिम देयर. हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड. इट सडनली dawned on me
that he had been taking these early morning rides for some time and had come to for me this morning only because he knew how much I longed to ride. It dawned on me, became clear to me. Now it became clear to him that he was riding this horse for many days and he came to, मतलब वो बहुत दिनों से उसको राइड कर रहा था, ठीक है, बट वो इसलिए आराम के पास आया क्योंकि चिल्ड्रन, even Aram liked riding horses. Who said anything about stealing a horse? He said. कि वो किसने बोला है? Anyhow, I said. How long ago did you begin riding every morning? वो कितना टाइम हुआ है तुझे ये घोड़ा राइड करते समय? Okay. Now, children, he said not until this morning. He said not until मतलब नहीं मैंने आज ही इसको लेके आया हूँ. Are you telling the truth? I said. उसने बोला क्या तुम सही बोल रहे? Of course not, he said. But if we are found out that what you are to say, I don't know what. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. It's like कि ऐसे तो नहीं लगता कि आज सुबह से. तो उसने बोला कि नहीं, अगर कोई पता लगाता है तो हम क्या बोलेंगे कि आज सुबह से ही है ये. All right, I said. We walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard. Okay, barn means a place for storing grains. ठीक है, barn का मतलब क्या हो? For storing grains. Okay, of a deserted lonely, ठीक है, vineyard, ठीक है, जहाँ पर grapes उगते हैं, which at one time had been the pride for the farmer named Fitwazian. Okay, Fitwazian. Now this place belonged to Fitwazian, and then it was a deserted means lonely place for storing grain. Okay, there were some oats and dry alfalfa in the barn. Now what is alfalfa? A kind of grass. Okay, alfalfa is the kind of grass. We began walking home. Now they began to walk home. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. ओके वो बोलते चलते चलते वो बात कर रहे कि हम क्या है ऐसा बिहेव करना हॉर्स के साथ, या हॉर्स हमारे साथ ऐसा बिहेव करना बहुत ईजी नहीं होता है. एंड एट फर्स्ट इफ वांटेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई टोल्ड यू आई हैव अ वे विद द हॉर्स. आई कैन गेट इट to want to do anything I want it to do. Horses understand me. तो बोलते कि पहले पहले घोड़े क्या करते बहुत वाइल्ड रहते हैं, ठीक है, दे वांट टू रन एनीवेयर, बट वो बोलते हैं कि मेरे एक तरीका है, ठीक है, मैं बहुत आराम से घोड़ों को चला सकता हूँ. और बोलते तू अंडरस्टैंड कर रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ. हाउ डू यू डू इट, आई सेड. उसने बोला तुम कैसे करते हो. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड. उसमें मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है किसके साथ, हॉर्स के साथ. यस बट वट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड. अब बोलते हैं कि कैसी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हो तुम. A simple and honest one, he said. ठीक है. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with the horse. तो वो बोलते कि I wish कि क्या है मैं ऐसा घोड़ों को समझ सकता. You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. उसने बोला जब तुम 13 के हो जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि घोड़े कैसे चलाने हैं, right? I went home and ate heartily breakfast. Okay, now he went home and ate breakfast. Okay, that afternoon my uncle Kushrov came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor. Now what's a parlor? It is a sitting room, okay? A parlor is a sitting room, sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian, okay, who out of loneliness had learned to speak Armenian. Okay, that means this John Byro was in another tribe, Assyrian, and he had come to meet Uncle Kushrov. Okay, my mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last, sadly,
Signing sadly, he said, "My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it." ठीक है. My uncle Khosrow became very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse?" तो उसने बोला, Uncle Khosrow got irritated as per his nature. It's like, it's no harm. Okay, what is the loss of a horse? Haven't we all lost our homeland? हमने अपना घर नहीं खोया है क्या? What is this crying? बोले छोटी सी बात, एक घोड़ा ही तो खोया है. That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said. But what of my surrey? Surry means light four-wheeled horse drawn by carriage. ठीक है, it is a carriage also. Surrey means a carriage which is attached to a horse. तो बोले मेरे surrey का क्या होगा, मेरे carriage का क्या होगा? What good is surrey without a horse? बोला कि carriage without a horse का क्या करेंगे? Pay no attention to it, my uncle Khosrow wrote. Again, गुस्से में थे तो Uncle Khosrow said, pay no attention to it. I walked 10 miles to get her, John Byro said. ठीक है, you have legs, my uncle Khosrow shouted. So he's like, I've got to go. I walked 10 miles to get here. ठीक है, तो बोलते मैं 10 माइल से यहाँ तक आया हूँ चल कर. ठीक है, तो बहुत मुश्किल होता है. यू हैव लेग्स, तो उसने बोला कि हाँ मुझे पता है तुम्हारे पास पैर है, तभी तो तुम क्या कर रहे हो, चल के आए हो. राइट, नाउ वी गेट टू नो दैट द हॉर्स इज जॉन बायरोज एंड इट इज अ मंथ it has been stolen. Okay, now children, then what happened? John Byro said, "My left leg pains me," the farmer said. "Pay no attention to it," my uncle Khosrow wrote. अब फिर से अंकल खुशरोव ने क्या बोला? Pay no attention to it. "That horse cost me $60," the farmer said. "I spit on money," my uncle Khosrow said. Now he's like, I spit on money. मैं money को इतना ज़्यादा importance नहीं देता. He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. Now what is he doing? Slamming means closing or shouting. Okay, जब उसने बोला कि कोई नहीं, पैसों की क्या बात करते हो, स्लैम दी हॉर्स, मतलब स्लैम दी डोर, गुस्से से चला गया. माई मदर एक्सप्लेन, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, ही शी सेड. अब उनकी मदर, आरम की मदर ने बोला कि जो ये जॉन बायरो इनके बहुत अच्छे हैं. ठीक है, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन. बोले बस वो अपनी लैंड का होम सिक है. ठीक है, इसीलिए वो थोड़ा दुखी हुआ. द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न Murad's house. Now who's running? Aram went to Murad to tell him. Okay, he was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. अब कहा, जैसे वो घर गया तो उसने देखा मुराद कहाँ है, पेड़ के नीचे बैठ के एक रॉबिन का पंख टूट गया था, उसको ठीक कर रहा था. ठीक है, और वो बर्ड से बात कर रहा था. What is it? He said. The farmer John Byro, I said. He visited our house. He wants his horse. You had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. अब वो बोलता है कि क्या बोल रहा है कि जॉन बायरो आए थे मेरे घर पर, वो बता रहे थे कि उनका घोड़ा खोया हुआ है. ठीक है, 1 मंथ से. बट प्लीज़ प्रॉमिस मी कि जब तक मैं इसको सीखूंगा नहीं कि इसको वापस मत देना. It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. but तुझे तो 1 साल लग जाएगा सीखते सीखते. We could keep the horse a year, I said. तो उसने बोला ठीक है, आराम से कि हम 1 साल तक अपने पास रख सकते हैं. किसको? घोड़े को. My cousin Murad leaped to his feet. Now my cousin Murad अपने feet पर खड़ा हुआ. What? He roared. Are you inviting a member of the Gergolian family to steal? The horse must go back to its true owners. बोला कि तो ये चाहता है कि मैं क्या वो घोड़े को स्टील करूं, जो हमारी ट्राइब है उसके अगेंस्ट जाऊं. उसने बोला नहीं, द हॉर्स विल गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर. When? I said. In 6 months at least, he said. बोला कि नहीं, 6 महीने के अंदर ये चला जाएगा.
He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. Now अब क्या हुआ, वो बर्ड को फ्लाई कराने की कोशिश करता है, इसी बात पे वो उड़ाने की कोशिश करता है, बट बर्ड क्या करती है, 2 बार गिरती है और फिर उठ के शी फ्लू स्ट्रेट. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn for the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. Okay, now every morning for 2 weeks वो क्या कर रहे, घोड़े को लाइफ पे चलाना शुरू कर दिया और फिर वापस रख दिया. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. अब हर हर बार क्या करता था, वो घोड़ा उसको फेंक देता था और लीप कहाँ करता था, ग्रेप वाइन में, राइट, वहाँ पर जाके उसको फेंक देता था. ओके, रोज यही काम हो रहा था. One morning, on the way to Fitwazine's desert vineyard, we ran into farmer John Byro, who was on his way to town. तो जैसी क्या हुआ, एक दिन हम वापस रखने जा रहे थे, तब तक हमें कौन मिले, जॉन बायरो. लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड. आई हैव अ वे विद फार्मर्स. उसने बोला कि मैं बात करूंगा, तू चुप रही हो, कि मुझे पता है फार्मर्स कैसे बिहेव करने. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर, एंड ही विश्ड हिम गुड मॉर्निंग. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली. अब क्या करा, फार्मर ने एकदम से हॉर्स को देखा, उसको देखने लग गया कि किसका घोड़ा कैसा है, राइट. Good morning, son of my friends, he said. What is the name of your horse? तो क्या हुआ, गुड मॉर्निंग कौन विश कर रहा है अब, जॉन बायरो, सॉरी हाँ, जॉन बायरो कर रहा है, और किसको विश कर रहा है, उन दोनों को विश कर रहा है, चिल्ड्रन, राइट. अब वो बोलता है सन ऑफ माई फ्रेंड्स. ओके, माई हार्ट माई कज़, एंड उसको पूछता है कि घोड़े का नाम क्या है. माई हार्ट माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियन. उसने बोला मेरा हार्ट इसका नाम है. अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स. उसने बोला इतना अच्छा क्या है, तूने नाम दिया है, कितना अच्छा घोड़ा है. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. मतलब ऐसे लगता है कि ये वही घोड़ा है जो खोया है, जो स्टील हुआ है. May I look into his mouth? Of course, said मुराद. तो उसने बोला कि क्या मैं उसके मुंह को देख सकता हूँ. तो मुराद ने बोला yes. The farmer looked into the mouth of the horse. Toot to toot, toot for toot, he said. I would swear इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डि नॉट नो योर पेरेंट्स. तो बोलते उसने हर उसका एक दांत गिना, हर चीज़ देखा और बोला कि मुझे लगता है अब मैं तो इसको अपना घोड़ा मानता अगर तुम्हारे पेरेंट्स मेरे दोस्त नहीं होते. द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी. ठीक है, तो बोलते हैं कि जो फेम है ऑनेस्टी का, वो मुझे पता है, सबको पता है. येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स. उसने बोला कि ऐसा लगता है ये ट्विन है, ये उसका दूसरा भाई है. अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट. गुड डे माई यंग फ्रेंड्स. तो वो बोलता है अ सस्पिशियस मैन, अगर किसी को भी घोड़ा दिखता इस तरह से तो वो क्या करता, ही वुड बिलीव हिज आइज देन हिज हार्ट. उसके हार्ट को बिलीव नहीं करता, उसकी आइज़ को ये चीज़ बिलीव हो जाती कि ये हमारा ही हो घोड़ा है. ठीक है. गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड. अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न. अब नेक्स्ट दिन कहाँ वो लेके जाते हैं, जॉन बायरो के घर लेके चल जाते हैं. द डॉग्स फॉलोज अस राउंड विदाउट मेकिंग अ नॉइज. तो क्या हुआ, वो डॉग्स भी उसको फॉलो करे. द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क. तो उसने बोला कि ये डॉग्स, मुझे लगा ये बाग करेंगे और सबको उठा देंगे. दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड. आई हैव अ वे विद डॉग्स. तो उसने बोला हाँ, अगर कोई और होता तो क्या होता, ये डॉग्स बाग करते. बट आई हैव अ वे, a special way with the dogs. My cousin Murad put his arm around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. अब क्या करता है,
अब वो मुराद क्या करता है, आई हैव अ वे विद द डॉग्स, तो बोला मेरे को पता है डॉग्स कैसे बिहेव करते हैं, आई हैव अ वे. नाउ माई कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज टू हिज हॉर्सेस नोज एंड पैटेड हिम. अब वो उसको प्यार कर रहा है. That afternoon, John Byro came to our house in his surrey. Surrey means carriage. And showed my mom the horse that had been stolen and returned. उसने बोला देखो यही घोड़ा है जो खोया था और मिल गया है. I did not know what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God. My uncle उसने बोला कि अब घोड़ा क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेटर टेम्पर है, अच्छे से बिहेव करता है. माई अंकल खुशरो हु वॉज इन द पार्लर, मतलब इन द where the sofa, right, in the sitting room, okay, became irritated and shouted, quiet man, quiet, your horse has been returned, pay no attention to it. मतलब खुशी की बात तो ये है ना कि क्या है, pay no attention to the temper, pay no attention to the muscular horse, just see that he has been what, returned, and pay no attention to it. Now children, thank you a lot for watching this video.